Okay, अस्सलाम वालेकुम everyone. I think we are good to start today's session. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. और बच्चों आज की क्लास के अंदर what we are going to do, we are going to solve the expected questions of the chapter that is called memory. So start करते हैं यहाँ पे हम लोग memory का chapter. And starting with the very first question, question number 1. This is on page number 51. आप लोग की बुकलेट्स के अंदर पेज नंबर 51 के ऊपर ये क्वेश्चन इज अवेलेबल. सो लेट्स सी. एग्जामिनर बता रहे कि आप लोग को मैच करना है यहाँ पे. सो द फर्स्ट वन सीडी रोम. तो सीडी रोम बच्चों क्या होता है आपके पास? इट्स एन ऑप्टिकल मीडियम. द टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड बाय द सीडी रोम इज ऑप्टिकल वन. देन वी आर हैविंग memory card, XD card. So memory card and XD card uses solid state technology. After this we are having DVD-R. So DVD-R again optical. Then we are having Blu-rays, again optical. Then we are having external hard disk. So this can be your magnetic stuff. And the last one बच्चों is pen drive या memory stick. तो memory stick भी आपको fall करती है under the domain of solid state memory. So this was question number 1. Moving forward आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. Okay. This is again an older question. एक बहुत पुराना question है हमारे पास यहाँ पे. एंड सबसे पहले बता रहा है कि a programming textbook provided with sample code in electronic form. तो आपको most suitable device यहाँ पे पिक करनी है that you can use for storing data. तो आप लोग मुझे जरा गाइड करें कि एक प्रोग्रामिंग बुक मुझे स्टोर करनी है and you are having the sample code in electronic form. So which device should I go for? देखिए स्टोर तो मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, लेकिन मोस्ट सूटेबल डिवाइस आई नीड ओवर हियर. मुझे सबसे ज्यादा सूटेबल डिवाइस यहाँ पे रिकमेंड करनी है. सो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. जरा मुझे मैक चैट के ऊपर लिख के बताएं. तो हमदान ने बताया कि सर वी कैन गो विद सीडी रोम. यस हमदान, दैट्स द परफेक्ट रिप्लाई. सो वी कैन गो विद सीडी रोम बिकॉज वी आर हैविंग द सैंपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कोड. और सीडी रोम में आप सिर्फ रीडिंग कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई. Storage of photographs in a digital camera. So for this we can go with flash memory. A backup of complete PC, external hard disk. And the last, second last, storage of operating system and application software. So that will be internal hard disk. And the last one is simultaneous recording and playback of video files with removable optical media. So of course that will be DVD, RAM. Examiner is awarding us 5 marks for this part. अभी बता रहे बच्चों, name a storage medium which is an example of a solid state memory. So you can write any of the medium that you have. So मैंने यहाँ पे लिख दिया universal, serial, bus, देयर आर मैनी. आप यहाँ पे SSD भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे SD कार्ड, XD कार्ड भी लिख सकते हैं. So you can write there are multiple options. 2 benefits of using solid state memory. So मैंने पहला benefit लिखा. अब देखिए the important thing over here is how I am structuring the answer.
मैं आंसर को किस तरह स्ट्रक्चर आउट कर रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप लोग लिख सकते हैं पोर्टेबल फास्ट, मतलब ये आंसर है ना, राइट आंसर है, लेकिन इसको प्रॉपर वर्डिंग में आप लोगों को लिखना होता है बच्चों। डेटा इज stored in binary form. That's why reading and writing becomes faster. अब देखिए आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी ये भी लिख सकते थे कि दे आर फास्टर, और मैंने कैसे आंसर लिखा, डाटा इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, दैट्स व्हाई रीडिंग एंड राइटिंग बिकम्स फास्टर। तो ये स्ट्रक्चरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप आंसर किस तरह कर रहे हैं, एग्जामिनर को अपना आंसर किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ओ लेवल पेपर 1। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब another advantage बच्चों you can write, they don't have any moving part, so that's why they are reliable. So we don't have any moving part in solid state memories, so that's why they are more reliable. Moving forward आगे बढ़ते हैं, this completes our question number 2. Okay, again बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 is also an older one, 2000 I think 7 या 2009 का ये क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है बहुत, लेकिन अगेन इस पैटर्न के क्वेश्चंस अभी भी आपका एग्जामिनर आप लोग को हिट करता है इन द एग्जाम, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस एज वेल. DVD RAM. So when we talk about DVD RAM, so that will be falling under the category of optical secondary storage. ROM, primary storage, hard disk, magnetic storage, flash memory, solid state secondary storage. Now अब वो बोले बच्चों बायोस कहाँ पे स्टोर होती है, तो बायोस इज स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी, तो मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया प्राइमरी मेमोरी को. देन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बच्चों आपके पास कहाँ पे स्टोर किया जाता है, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज स्टोर्ड इन प्राइमरी मेमोरी. रैम का तो ऑप्शन नहीं ना हमारे पास, रोम ही है हमारे पास. ठीक है, सो दैट विल बी आल्सो ए. बायोस टू स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड, अच्छा स्टोर की बात हो रही है बच्चों, मतलब परमानेंट स्टोरेज की बात हो रही है, और जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उनकी स्टोरेज की बात हो रही है, परमानेंट स्टोरेज, तो दैट इज हार्ड डिस्क. आपके पास हार्ड डिस्क में स्टोर किए जाते हैं, तो दैट विल बी बी. Simultaneous recording and playback, so that is DVD, and DVD का option, yes we have DVD RAM, so that is C. Now again one benefit for the flash memory, तो आप लोगों ने अब हम लोगों ने लिखे थे, एक कोई भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई थर्ड वन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दे आर compact in size, portable, and the drawback बच्चों of SSD या solid state drive is या flash memory is low endurance level. And I told you people, endurance level क्या होता है, data can be
Data can be corrupted easily. So the endurance level of flash memories is quite lower. So this completes our question number 3. Moving forward, आगे बढ़ते हैं बच्चों अब यहाँ पे और magnetic is one of the storage medium used by secondary storage. Name 2 other different types of storage medium. Give 2 devices and each type of named medium. तो बच्चों मैंने यहाँ पे 2 devices के नाम भी बताने आपने. So one of the medium मैंने यहाँ पे बता दिया. Let's say the medium will be solid state technology, या we call it as NAND technology. The devices can be SSD, solid state drive. Another example for this device can be USB. Another example can be SD card, memory card, you can say. So you can write any of these over here. Second medium बच्चों is optical medium, and you can write Blu-ray. Another device example of the optical is DVD. Let's say RW. ठीक है, so moving forward, अगले पार्ट में बोल रहे बच्चों describe how buffers and interrupt are used for sending data from main memory to one of the secondary storage devices. अब देखिए वैसे तो मैंने ऑलरेडी ये आप लोग को पूरा क्वेश्चन करवाया था कि रोल ऑफ इंटरप्ट्स एंड बफर्स, बट दैट वाज इन द प्रिंटिंग प्रोसेस, जब मैं आप लोग को प्रिंटर और बफर वाला रोल प्ले करवा रहा था कि हाउ अ लार्ज डॉक्यूमेंट इज बीइंग प्रिंटेड. लेकिन दिस टाइम दे आर आस्किंग यू फॉर अ डिवाइस, एक डिवाइस के बारे में बात कर रहे हैं वो, तो थोड़ा सा डिफरेंट आंसर होगा हमारे पास. तो लेट मी राइट डाउन कि किस तरह इस आंसर को मैं स्ट्रक्चर करूंगा. लेट्स सी. Data will be sent from main memory to secondary storage by CPU. Data will be placed in secondary memory buffers when buffers are full. CPU will stop sending further data and will perform other tasks. Data in
secondary memory, buffers will be stored permanently and when buffers will be empty, secondary storage device will send an interrupt signal to CPU requesting for more amount of data. And the last step, same process will be repeated until the whole document is being, sorry, not document, until the whole data is stored in memory. So बच्चों, this is how you are going to explain the stuff. अब देखिए यहाँ पे vocabulary बड़ी मैटर करती है, स्ट्रक्चरिंग, सीक्वेंस, आप किस तरह आंसर कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने एग्जामिनर को, ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है इन पेपर 1. सो आंसर का स्ट्रक्चर, वर्ड्स की क्वालिटी, इनका सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है. ठीक है. सो जस्ट टू बी श्योर के बिल्कुल भी रैंडमली अपने आंसर्स को थ्रो नहीं करेगा टू द एग्जामिनर्स लाइक फास्ट स्लो, ऐसे आंसर्स नहीं होने चाहिए. ठीक है. प्रॉपर आप एक्सप्लेन करें. लाइक इन द प्रीवियस क्वेश्चन वी आल्सो हैव सीन कि अगर हम लोगों ने बताना था सिर्फ कि दे आर फास्ट, तो हम लोगों ने पूरा उसको एक्सप्लेन करा. हमें बताना था कि कोई मूविंग पार्ट नहीं है, तो मैंने पूरा बताया कि अगर मूविंग पार्ट नहीं है तो उससे फायदा क्या होगा, दे आर रिलायबल. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा, क्वेश्चन नंबर, अभी बच्चों ये वाला मैं अभी इसको ऑफ करूंगा, ये हम लोग क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे अलग से. ये मैं पूरा एक मैंने टॉपिक बनाया है, दैट इज कॉल्ड फाइल मेमोरी कैलकुलेशन. तो ये हम लोग अलग से परफॉर्म करेंगे सारे कैलकुलेशन के क्वेश्चंस. ओके. A dash disk consists of circular disk which is coated with a thin metal or some other material which that is highly reflective. So that is the optical one. The technology used in optical, bachcho, is anyone? What will be the answer for number 2? Which technology do we use in optical? ठीक है. बी, फातिमा, हमदान, थैंक यू. एक ऐसी रैंडम मैंने क्वेश्चन पिक कर लिया था. द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क इज गिवन बाय ए, नंबर ऑफ सेक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर. Which is the following pattern of for an optical disc? तो बच्चों ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता. ये आपके पास हार्ड डिस्क का है. दिस इज एन ऑप्टिकल वन. हार्ड डिस्क में सर्कुलर होते हैं आपके पास और इसमें कॉन्सेंट्रिक होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ऑप्शन दैट वी हैव. वायरस स्टैंड्स फॉर, दिस इज नॉट वर्चुअल, दिस इज वाइटल. ये छोटी छोटी मिस्टेक हुई है. So vital source, vital information resource under seas.
So that's the full form of virus. I hope बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा वायरस का फुल फॉर्म. So ऐसी randomly मुझे एक क्वेश्चन नजर आ रहा था. I picked that question up. So virus stands for vital information resource under seas. ये तो आप लोग बताएंगे. Which of the following is the fastest means of memory access for CPU? I want everyone to answer. जरा ये बताएं मुझे fastest memory कौन सी मेमोरी होती है हमारी? Daniel, your answer is right. Aska, Fatma, Osja, Abdul Nafe, उमर, हसन ने भी सही बता दिया भाई हमें. Ukasha, no, your answer is wrong. बाकी ऑलमोस्ट सब ने, उस्मान ने भी सही बता दिया. अब्दुल नाफे रॉन्ग. मैं जितनी तुम्हारी हर जगह तारीफ करता हूँ, हर जगह जाके तुम अब्दुल नाफे आंसर गलत कर दो, ब्लंडर कर दो. ठीक है. तो यू बच्चों नीड टू रिमेंबर द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज बी, कैश मेमोरी, एंड दिस मेमोरी इज कॉल्ड IAS, इमीडिएट एक्सेस स्टोर एज वेल. ठीक है. सो ये सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपके पास. अच्छा जी, ये आप लोग के वेरिएंट का क्वेश्चन है बच्चों. रिसेंटली आया था, आई थिंक 2020 में ये सवाल आया था. सो आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन. अच्छा लगा मुझे सवाल. 2020 में था ये, शायद 2019 में था, लेकिन अ रीसेंट क्वेश्चन. इट हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ रीड एंड राइट साइकिल्स. बोथ, कोई भी आपकी मेमोरी अनलिमिटेड नहीं होती. ठीक है. यूजेस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सो दैट इज HDD, हैज मूविंग पार्ट. HDD is non-volatile. Both can be used as an external storage device to back up data. Generally, we prefer hard disk drive for external storage of data, but SSDs can also be used. It uses flash memory to store data, so that is SSD. Optical storage is another type of storage. Give 2 examples of the optical storage, so you can name any. Blu-ray, DVD RAM. Another example is CD-ROM. Another example is DVD, RW. So you can write any of these examples over here. Moving further forward, आगे बढ़ते हैं बच्चों. और अगेन मेमोरी का क्वेश्चन है. अभी इसको हम स्किप करेंगे, बाद में देखेंगे आराम से इसको. जब मैं मेमोरी कैलकुलेशन की अलग से एक क्लास लूंगा, उसके अंदर इसको डील करेंगे. ओके, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं. पहले पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 8. How many GB of RAM does a computer have if they are having 2048 MB? अब ये बिल्कुल बच्चों एक रैंडम ही आसान सा सवाल आ गया है. सो मैं अभी ये वाला परफॉर्म करवा देता हूँ, लेकिन अगेन आई विल बी, ये मैं अलग से आप लोगों को पूरा मेमोरी का एक चैप्टर करवाऊंगा अभी. ठीक है. सो दिस विल बी 2 GB and you can write के 1 GB is equal to 1024 MBs. अब आप लोग के माइंड में ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर when we are going to divide it by 1000 and when we are going to divide it by 10424, सर 1024 कब यूज करेंगे, सर 1000 कब यूज करेंगे, ये बातें करेंगे हम लोग जब मैं आप लोगों को मेमोरी के कैलकुलेशन वाला पार्ट करवा रहा हूँ. ठीक है, अभी नहीं. ये तो एक रैंडमली एक सवाल आ गया था तो हमने बता दिया. 2 GB. Describe one item that can be stored in RAM. So RAM में हमारे पास क्या क्या स्टोर हो सकता है? You can name any of the all
application softwares that are currently in use. Now, you need to give example of बच्चों 3 ways a RAM is differentiated between and ROM. Just give me a minute. Okay, sorry, where I was. So मैं आप लोग को बता रहा था, हाँ. Now we need to differentiate between RAM and ROM, and we need to write 3 differences between RAM and ROM. So there are many differences that we have. आप लोगों क्लास में मैंने नोट्स में बड़े अच्छे अच्छे लिखवाए हैं, तो कुछ यहाँ पे जनरल बात कर लेते हैं. RAM is volatile memory, while ROM is non-volatile. RAM can perform read-write both operations, while ROM can only perform read operation. RAM stores all application softwares required to execute, while ROM stores BIOS. So a perfect reply to the examiner moving forward.
अच्छा जी, 25 kilobyte is larger than 100 MB. Of course, this is false. 999 MB is larger than false. 35 KB is smaller than 2 GB. Yes, that's true. 2350 bytes is smaller than 2 KB. 2 KB means 2048 kilobytes. Is smaller than 2 KB. So that's again false. Moving forward, another one. आप लोग को यहाँ पे यूनिट्स अरेंज करने, 4 मार्क्स आपका एग्जामिनर आप लोग को अवार्ड कर रहा है. अब देखिए, मैं इस चैप्टर के जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं दैट माइट कम इन द एग्जामिनेशन, तो वो हम लोग सारे कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग परफॉर्म 1 by 1. ठीक है ना. तो आप लोग का एक रिवीजन भी अच्छा हो रहा है और आप लोग को एक आइडिया भी हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स में आने वाले हैं. सर, इज इट करेक्ट दैट रोम परमानेंटली स्टोर्स ब्राउजिंग डाटा? नो नो नो, नेवर. 0 marks for that. Rom never stores anything about like that. Rom only stores the starting instructions of the operating system that are required to start your operating system. ठीक है बेटा? So Rom cannot store the browsing history and anything else. कुछ भी स्टोर नहीं कर सकती Rom. सिर्फ आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करने के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है. ओके भाई. बिट के बाद हमारे पास आता है निबल, 4 bits. Then we are having byte. Then we are having kilobyte, then megabyte. And then we are having gigabyte. (47 KB is larger than false. 250 bytes is smaller than, yes, that's true. 50 GB is larger than, yes, that's true. 1 terabyte is smaller, that's false. Describe how the data is read from a compact disk. So ये एक्सप्लेन मैं करवा देता हूं बच्चों आप लोगों को. Laser beam, after passing through series of mirrors, hits the disk surface, called pits. The laser beam is reflected back called pumps. Reflected laser light is sensed by detector
if reflection is from crystalline surface, this means one was stored. Else, if reflection is from amorphous surface, this means zero was stored. Whole data is read in the form of pits and bumps. So a good reply to the examiner बच्चों for answering this. हमने बता दिया भाई लेजर लाइट हिट करती है, पिट्स कहलाते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करती है, दैट इज कॉल्ड बम्प्स, और जब वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती है तो हमारे पास डिटेक्टर एक लगा हुआ होता है. अगर रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सरफेस देन दिस मींस it stores one, and if the reflection was from an amorphous surface, this means the surface was storing a zero value. So this is how you are going to explain this stuff over here. अगेन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को अलग से क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा. सो यहाँ पे बच्चों हमारे पास हमारा मेमोरी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है. अच्छा टॉपिक था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे हमारे पास यहाँ पे. इन आवर नेक्स्ट सेशन में आप लोग को अब फाइल कैलकुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा. अलॉन्ग विद फाइल कैलकुलेशन हम लोग ट्रांसलेटर्स के क्वेश्चन भी फास्ट ट्रैक के कंप्लीट करेंगे. आफ्टर सॉल्विंग ट्रांसलेटर्स देन इन द नेक्स्ट सेशन security and ethics. After security and ethics we will be solving logic gates, and after logic gates we will be moving towards the remaining part of input output devices along with the questions of IO devices. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर एंड स्टे सेफ.